A very good morning, children. Welcome to the psychology classroom. I hope you all are doing very well and I hope you all are working very hard. Children, in the previous video, we had discussed about the projective technique. So, we are studying the self and personality chapter and we are on the end of the topic of this chapter. When we studied about the assessment of personality topic, so we came across to know that there are so many techniques for the assessment of the person's personality. The first technique which I had discussed with you is self-report. The second is the projective. Today, the techniques which I am going to discuss with you is behavioral analysis. Behavioral analysis. It is also one of the techniques for the assessment of the person's personality. If you have to assess anyone's personality, this is also one of the very good technique. Okay? ना ही सिर्फ आप सेल्फ रिपोर्ट मेथड से पर्सनालिटी की असेसमेंट कर सकते हो, ना ही प्रोजेक्टिव, बिहेवियर की भी एनालिसिस करके भी आप बहुत सी चीज़ों को जान सकते हो. Behavior is something very important role to play. Whatever we respond toward the stimuli, that is our behavior. And by analyzing that behavior also, you will be able to know so many things. Now, in terms of the behavioral analysis, some of the techniques are discussed. What are the techniques? कौन-कौन से techniques हैं behavioral analysis के? First is interview. Through the help of interview, you can do the analysis of the behavior. Observation. Interview, observation. Then third is behavior rating. Nomination. Situational stress test. So these are some of the techniques, children. Interview, observation, behavior rating, nomination and situational stress test. I want from you all to note it down in your copy, and one by one we will do the discussion of these behavioral analysis techniques. Interview is a very important method through which you can do the analysis of someone's behavior. Obviously, in an interview, the two persons are involved always. The one is the interviewer and another is the interviewer. दो पर्सन हमेशा होते हैं, एक होता है interviewer, those who are taking the interview, and interviewee, those who are giving the interview, whom we called as respondent also. So interviewer and interviewer. आगे बढ़े. So by the help of interview, you can do the analysis of the behavior and you can be able to assess someone's personality. Because in an interview, you do not only get the verbal messages from the interviewee or the respondent, but also you get the non-verbal messages. Interview also give you so many kind of non-verbal information which we known as body language. It also tell you so many things, and as a psychologist or as a counselor or as a
researcher, you will get so many things about it. Interview basically 2 types के होते हैं, structured और unstructured. Okay, so I am going to rub it with the hope you have noted it down all the things. So one by one. Interview स्ट्रक्चर्ड होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी होते हैं. ठीक है. इंटरव्यू 4 कंडीशंस में हो सकते हैं. इंडिविजुअल टू individual. This all study you all have studied in class 11 also, so it's just a kind of revision for you all. Group to group, individual to group, group to individual. Okay, these are the 4 conditions. I want from you all to note it down. आप इसे नोट डाउन करेंगे. इंडिविजुअल टू ग्रुप, ग्रुप टू ग्रुप, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ग्रुप टू इंडिविजुअल. ओके. Interview can be structured. Means what is the meaning of structured interview? The structured interview have a set of questions and a set of procedures to follow. Unstructured interview do not have such kind of set of questions. Randomly they can ask any question from anywhere. It can be take place in 4 manners. Individual to group, group to group, individual to group and group to individual. Means what is the meaning of individual to individual? In individual to individual, the interviewer is also one person and the interviewee is also one. Group to group, when the interviewer is more than one person. So group to group means when the number of persons who is taking the interview, okay, is also more than one, and those who are giving the interview is also more than one. The third condition is individual to group. Individual to group means when the interviewer who is taking the interview is one, but those who are giving the interview, they are in more number, they are in more than one. That is individual to group. Individual, the interviewer वो एक है, but जो respond कर रहा है वो एक से ज़्यादा है. Sometimes it is a situation of viva होता है तो उसमें ऐसा situation होता है. Last is group to individual. Group to individual is a sometimes mean जो interviewer हैं वो एक से कई ज़्यादा हैं और जो इंटरव्यू दे रहा है द रेस्पोंडेंट एंड द इंटरव्यू वो एक ही है. सो इट इज़ समटाइम अ काइंड ऑफ पैनल इंटरव्यू जो होते हैं, तो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए ग्रुप टू इंडिविजुअल. ठीक है. ठीक है. इंटरव्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. आई थिंक ये एक टेक्निक है जिससे कि बिहेवियर की एनालिसिस हम कर सकते हैं और पर्सनालिटी का असेसमेंट कर सकते हैं. इट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस विच आर सेट बाय द इंटरव्यूअर टू बी आस्क्ड. सो आगे बढ़ते हैं.
The next technique of behavioral analysis is, after the interview, every technique has some merits and demerits. So interview technique also has some merits and demerits. Merits, it is one of the easy method through which we can do for it. Second, demerit, it is time taking, and obviously it requires the time to do anything. Second is the observation. This also you have studied in class 11. So observation भी एक टेक्निक है behavioral analysis का. Through the mean of observation, you are able to do anyone's analysis of the behavior. Observation, when we come to the word observation, it becomes more scientific. There is a difference between looking and observing. Looking is a biological aspect, where observation means a psychological aspect. Looking means सिर्फ देखना, ठीक है. और ऑब्जर्विंग की बात जब भी आती है, हम लोग जब भी ऑब्जर्वेशन वर्ड यूज करते हैं, इट मीन्स एनालिसिस करना, रिकॉर्डिंग करना, सिलेक्शन करना. सो द 3 processes involved in observation. First, selection. Second, recording. Third, analysis. 3 चीजें हम लोग ऑब्जर्वेशन में करते हैं. The 3 things which we do in observation. First is selection. Selection of a particular behavior. कोई भी behavior को select करना. क्योंकि there are so many behavior. You are not able to do the analysis of each and every behavior of an individual, of a situation, of anything. So first of all, you have to select the behavior. Then you have to do the recording of that particular behavior, and then you have to do the analysis. फिर आप क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं. So it is purely a scientific method for the analysis of the behavior and for the assessment of the person's personality. Selection, recording and analysis. After doing these 3 things, selection, recording, analysis, it is also of many kind. इसके भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं. ऑब्जर्वेशन आप कई तरीके से कर सकते हैं. सबसे पहले नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन होता है. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मीन्स व्हेन यू डू द ऑब्जर्वेशन इन अ नेचुरल सेटिंग, इन अ रियल सेटिंग. Second, controlled observation. Observation can also be done in a controlled manner. Controlled manner means by doing the experiment. Okay? ये controlled manner में भी किया जा सकता है, naturalistic way में भी किया जा सकता है और controlled manner में भी किया जा सकता है. Like an experiment method, where you will control each and everything. Okay? Then observation can be done as a participant. Or it can be done as a non-participant. Observation अगर हमें if we have to observe any particular group, so we become a member of that particular group. So observation can be done as a participant also, or it can be done as a non-participant. Sometimes it is not required that you become a member of that particular group. From at a distance or by the use of some devices like the camera, putting the camera, you can do the observation of that particular group. So observation can be
be done as a participant also, or it can be done as a non-participant also. So both the manners are there. So these are some of the techniques by the help of which we can do the analysis of someone's behavior. Naturalistic way में भी कर सकते हैं. We can do it in a controlled manner. We can do as a participant. We can do as a non-participant. Note down these things in your copy. Okay, आगे बढ़ते हैं. Next technique of behavioral analysis. और कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे कि बिहेवियरल की एनालिसिस कर सकते हैं? The third is the behavior rating. आप बिहेवियर की रेटिंग करा के भी बिहेवियरल एनालिसिस कर सकते हो, पर्सनालिटी असेसमेंट कर सकते हो. बिहेवियर रेटिंग, there are so many rating scale which are given by the or provided by the psychologist and the researcher, which you can use in order to do the analysis of someone's behavior. The rating scale have the characteristics that you will found it in a different point rating scale. Some are in a 4-point rating scale, some are having 5, 6. इस तरीके से बहुत से rating scale होते हैं. रेटिंग स्केल में कुछ नंबर्स दिए होते हैं. द नंबर्स आर प्रोवाइडेड एंड देयर डिस्क्रिप्शन आर प्रोवाइडेड. फॉर एग्जाम्पल, एनी पर्टिकुलर स्टेटमेंट वॉज गिवन ओवर हियर एंड फॉर दैट वन यू हैव टू डू द रेटिंग एंड द रेटिंग ऑफ 4-point स्केल इज या 3-point स्केल इज न्यूट्रल, एग्री, डिसएग्री. इस तरीके से रेटिंग स्केल बन सकता है. 3-point, ये 3-point रेटिंग स्केल हो गया. ओके, सिमिलरली 5-point भी हो सकता है. यहाँ पे आप इसमें एड ऑन कर सकते हो. ठीक है, सम टाइम एग्री, सम टाइम डिसएग्री, सम टाइम एग्री. And here you can add sometime disagree. आगे बढ़े. So in this manner the rating scale were given. So behavior rating is one of the technique which is used basically with the person who are known to you. So it has been found that they better tell about you. वो आपके बारे में ज़्यादा better बता सकते हैं. ठीक है, it was done with the person who known to you and who knows to you very well. So they tell you about you in a very well manner. So it is also one of the way, आप कह सकते हैं ये भी एक तरीका है जिससे कि हम लोग किसी की पर्सनालिटी को मेजर कर सकते हैं. अगर हमें किसी के बारे में, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू नो अबाउट द ए पर्सनालिटी, तो वी आस्क टू द बी अबाउट द ए and whatever the rating the B will give about the A, on that basis of rating we will assess the personality. तो यही फॉलो होता है प्रोसीजर. ठीक है, तो बिहेवियरल रेटिंग में अगर हमें किसी की पर्सनालिटी को मेजर करना है तो जो उसको अच्छे से जानता हो, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, दे कैन बी देयर फ्रेंड्स, दे कैन बी देयर ब्रदर सिस्टर, एनीवन. तो यू टू ऑन दैट वन you will provide these behavior rating scale and they will rate them, their behavior on these rating. Either it can be 5 point, 6 point, 7 point, it can be anything. Okay. But obviously, like every technique has some merits and demerits, so this technique also has some demerits also. Okay, merits भी हैं तो demerits ये है कि it is very easy and it is very subject found to
do it very interesting also. Interview method is also very good, observation method is also good, rating method भी बहुत अच्छा है, but इसका demerit basically इसमें कुछ demerits आते हैं जो आपको डिस्कस करना है. बिहेवियर रेटिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देना बच्चों, क्योंकि इट इज समवेयर आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन सेपरेटली. The two questions were asked from this particular topic. Explain the behavior rating for the assessment of personality और behavioral analysis. तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि बिहेवियर रेटिंग एनालिसिस से पूछता है तो सिर्फ वो बिहेवियर रेटिंग बताते हैं. बिहेवियरल एनालिसिस इंक्लूड एवरीथिंग एंड बट बिहेवियर रेटिंग पूछ रहे हैं तो आपको सारी चीजें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बिहेवियर रेटिंग बताओगे. बिहेवियर रेटिंग के डीमेरिट्स कई बार पूछा जाता है कि इस मेथड के डीमेरिट्स क्या है. तो लेट अस डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स. सबसे पहला डीमेरिट इसका ये है, हेलो इफेक्ट. सेकंड क्या है, एक्सट्रीम कैटेगरी बायस. थर्ड है मिडिल कैटेगरी बायस. Halo effect, extreme category bias and middle category bias. Halo effect is a tendency, you can see that we catch the single favorable and unfavorable characteristics of a person, and on the basis of that single favorable and unfavorable characteristics we make it for other one also. इसमें करते क्या है, हेलो इफेक्ट हो सकता है बिहेवियर रेटिंग मेथड में, मीन्स जिससे हम करवा रहे हैं रेटिंग उस पर्सन की, तो वो क्या कर सकता है, हो सकता है उसकी कोई एक फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी एक अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स गुड ट्रेट्स को वो लेके सारे रेटिंग पे ही रेट लाइक दैट वे. और या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ उसमें अनफेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हो या ट्रेड्स हो, उन्हीं को लेके वो सारे रेटिंग स्केल, सारे क्वेश्चन, ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस पे रेटिंग कर दे. तो ये एक डीमेरिट देखा गया है. ठीक है. हेलो इफेक्ट, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द हेलो इफेक्ट चिल्ड्रन. हेलो इफेक्ट में क्या होता है, जैसे एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. For example, in a questionnaire it is given that he seldomly laugh, or the question is given he sneer, he make fun of everyone, he makes fun of everyone. ठीक है. अब इस पे हम अगर रेटिंग करा रहे हैं, he makes fun of everyone, तो what is happening, the person who जो जानता है उसे वो रेटिंग कर रहा है. अब नाउ व्हाट द पर्सन नोज अबाउट हिम और हर. ओके, मान लीजिए उसको उसके बारे में अच्छी चीजें मालूम है, तो वो ये रेटिंग करेगा नो, डिसएग्री, ही नेवर मेक फन ऑफ एनीवन. तो वो हो सकता है उसके एक ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके सारे क्वेश्चंस पे जज कर दे. दैट इज अ हेलो इफेक्ट. सेकेंड है एक्सट्रीम कैटेगरी बायस. एक्सट्रीम कैटेगरी बायस भी देखने को मिलता है in behavioral rating. What is happening in extreme category bias? The raters usually respond to each and every item in an extreme, either in the strongly agree or either in the column of strongly disagree. They do not possess any of the rating in agree, neutral or disagree. They put their rating
in an extreme category. This is also one of the tendency which has been found in the behavioral rating. It somewhere shows the disinterest. Okay. Next is the middle category bias. Middle category bias, it indicated from the name, putting their rating in the middle category. Means putting on everything on neutral. Okay. So these are some of the demerit which found with the behavior rating. तो ये कुछ demerits हैं जो कि behavior rating के साथ मिलते हैं, जिससे हमें पर्सन की सही से प्रॉपर पर्सनालिटी जजमेंट नहीं मिल पाती. सो इंटरव्यू हमने डिस्कस किया, ऑब्जर्वेशन डिस्कस किया, बिहेवियर रेटिंग डिस्कस किया. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट है नॉमिनेशन. नॉमिनेशन जो टेक्निक है इसे हम लोग पीयर ग्रुप रेटिंग भी कह सकते हैं. ये पीयर ग्रुप रेटिंग होता है नॉमिनेशन. This you can call as that peer group assessment. ठीक है. What is happening in the nomination? नॉमिनेशन में क्या हो रहा है कि जो जिसको अच्छे से जानता है, अ पर्सन हु नोज टू यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इससे भी पर्सनालिटी का असेसमेंट करते हैं. जैसे क्या करते हैं, इन अ क्लास ऑल्सो देर आर सो मेनी चिल्ड्रन, द क्लास इज ऑफ 20 नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है. जस्ट सपोज एक क्लास है, देर आर टोटल 20 स्टूडेंट्स वर देयर, and the teacher come into the classroom and he or she divided that class into 4 groups and containing every 4 group 5 member. Okay, so 4 groups में divide हो रहे that class. Now for example, a new student enter into the classroom. एक new student आया, तो now new students या कोई भी किसी भी जो भी स्टूडेंट है उसमें से भी हम किसी को लेते हैं, और इसमें नॉमिनेशन में कहते हैं कि आप चूज करिए कि आप किस ग्रुप के साथ काम करना चाहते हैं. पर्सन जिस भी ग्रुप को चूज करता है उससे भी उसकी पर्सनालिटी की असेसमेंट होती है. बेसिकली नॉमिनेशन मीन्स चूजिंग या पिकिंग अप करना. वॉट एवर यू चूज इन योर लाइफ, इन एनी सर्कमस्टांसेस, इन एनी सिचुएशन, दैट ऑल्सो डिफाइन योर पर्सनैलिटी. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, बच्चों के सामने बहुत सारे फ्रूट्स रख दिए जाते हैं और उनसे पूछा जाता है यू हैव टू चूज वन फ्रूट. तो दैट अगर बच्चा फॉर एग्जाम्पल मैंगो इज देयर, guava is there, grapes are there, and if the child choose the mango, it shows the liking of the child. Okay, so nomination is also one of the technique through which we can get an idea about the person's personality. That is why it is also known as peer group assessment. ठीक है, peer ratings होती हैं इसमें. आगे the last one is the situational stress test. Situational stress test. It is also one of the techniques which come under the behavioral analysis. Situational stress test. Stressful situation provide किया जाता है person को और ये देखा जाता है कि how they are behaving in that particular situation. That also defines or describe many things about the person's personality. If you have seen, like for example, if a person is taking an interview and selecting a personnel for their organization, so they can do something in order to check the someone's personality, like where
the situation where all the interview was sitting down, वो वहाँ पे कुछ ऐसे stressful situation create कर दें और फिर देखें कि उसका क्या impact पड़ता है person पे. तो that is a situational stress test. तो ये देखा जाता है, it has been found that if a person is able to cope with that stressful situation, so whatever the problems or difficulty when came into my organization in my letter आगे जाके, तो he will be able to survive, he or she will be able to succeed. Okay, so placing the person in the stressful situation and seeing or observing how the person is reacting to that stressful situation also somewhere describe person's personality. So these are the techniques, these are some of the behavioral analysis technique for the assessment of the person's personality. You note down this point also. So I hope you understand the topic clearly. Thank you so much for carefully observing.